Good morning, everyone. So, एपर्यंत आमे different kinds of PYQs देखुतले, specifically grammar based देखुतले, जोते आमे sentence correction करुतले. एबे आजी मोड specifically छोटो तो कही भी नहीं, किंतु different types of जो fill in the blanks vocabulary based आसची, आजी ता ऊपर आजी आमे discussion करिबा. मु माने approach भी बतेबी, different types भी cover करिबी. माने one word one blank सेटा गोटे पैटर्न, one word two blank सेटा गोटे पैटर्न, two blank two words सेटा भी गोटे पैटर्न. आ गोटे पार्ट अछि जोटा कि क्लॉज टेस्ट हमें कहू, जो गोटे पैराग्राफ दिया हुए आ उस पैराग्राफ को हमें ता धरे किछि किछि वर्ड्स मिसिंग थाए हमें सेटा को करू. तो आज मु ट्राई करिबी कि one word one blank पैटर्न आ two word two blank पैटर्न जोटा कि बैंक पीओ आईबीपीएस 20 to 23 सॉरी 23 24 25 रे पढ़ी थिला. तो तारी से गुडा को मु आज कवर करिबी वन बाय वन. वी विल गो वेरी स्लो. अच्छा, द पर्पस ऑफ दिस क्लास इज नॉट कि तमे ठीक करूचो भूल करूचो. द पर्पस ऑफ दिस क्लास इज आल्सो नॉट कि तमे केतरा जानिचो केतरा जानिनो, कोतरा वर्ड सिखिचो केतरा वर्ड सिखिनो. द पर्पस ऑफ दिस क्लास इज कि अप्रोच केमिति करिवो एंड एलिमिनेट केमिति करिवो ऑप्शन गुडा को बेसिस रे एलिमिनेट करिवो, जदि टोन बेसिस रे एलिमिनेट करछो काहे कि टोन बेसिस रे एलिमिनेट करिवो, माने हाउ टू गेट द आंसर करेक्ट सेटा होची आज अप्रोच. आज क्लास रे निजर माने वोकैबुलरी नॉलेज टेस्ट भी करि परिवो, किंतु अप्रोच ता केमिति होची सेटा ता पर बेसी ध्यान दबो कि तम अप्रोच तमे एमदी बहुत क्वेश्चन तुम देखियो कि तुम देखला मत फटकन जान जो कि हां एटा ही आंसर हे थाई पारे, एटा ही आंसर हे थाई पारे आ एटा ही आंसर भी तो जो डिफरेंस ता हमें सेटा आजी कवर करे को चेष्टा करिबो. ओके, सो आजी हमें कवर करियो वोकैबुलरी बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स जोटा मु कहले तीन टाइप रो अछि. माने आजी जोटा कवर करे तीनटा टाइप, गोटे जो वन ब्लैंक वन वर्ड, सेकंड ता होची टू ब्लैंक टू वर्ड एंड थर्ड ता होची गोटे क्लॉज पैसेज, गोटे क्लॉज पैसेज जोटा मु आजी कवर करबी. ओके, जेतोले हमर फिल इन द ब्लैंक्स गुडा आसे, फिल इन द ब्लैंक्स रे एई भले इंस्ट्रक्शंस थिबो. फिल इन द ब्लैंक्स थिबो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस अ वर्ड इज मिसिंग एंड रिप्लेस्ड बाय अ ब्लैंक. से कोची वर्ड इज मिसिंग एंड इज रिप्लेस्ड बाय अ ब्लैंक, माने वर्ड ता जे ब्लैंक रे गोटे वर्ड नाही से वर्ड ता सेठी दिया हो. को वर्ड दिया हो निज मन नो जो ऑप्शंस गुडा थिबो. चूज द बेस्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, जेति की ऑप्शंस दिया है ता भितरु ही चूज करिबा. ऑल्दो आमे देखिबा बेले बेले आम पाखे गोटे बेटर ऑप्शन थाई पारे कि से ब्लैंक रे जीवो कि से वर्ड ता नथिबो, ऑप्शन रे नथिबो. तो हमकु कॉन्टेक्स्ट बेस करके चूज करिया पड़िबो कि व्हिच इज द इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हिच इज द वर्ड दैट शुड गो. Okay, context based रे हमो देखिया पड़े which is the word that should go over here and why we are eliminating other words. Okay, given option that can fit into the sentence without most important without altering the intended meaning. Means if I am adding a word or I am placing a word in the blank, जो intended meaning of the sentence अच्छी ताधरे कौनसी ऑल्टरेशन आसीबनी. दैट मींस यदि द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज सपोज्ड टू बी पॉजिटिव एनकरेजमेंट, ताधरे हमें यदि कौनसी वर्ड को जोथरे कि सेटा पॉजिटिव नो है कि नेगेटिव हो जाउछ किबा कौनसी डिस्करेजिंग हो जाउछ, देन दैट इज नॉट द राइट ऑप्शन. सो दिस इज मोर इंपोर्टेंट विदाउट ऑल्टरिंग द इंटेंडेड मीनिंग को मीनिंग ताकू अल्टर न करिकी हमें ताकू अटेम्प्ट करिबा. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन. देखो, शी डिसाइडेड टू डोनेट अ पोर्शन ऑफ हर अर्निंग टू द लोकल डैश दैट सपोर्ट्स अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन. अच्छा, क्वेश्चन देखिले पिला मानन को फर्स्ट जो इंस्टिंक्ट था से माने कोन करिवे, क्वेश्चन देखिले आम तामु जे फर्स्ट जोटा लागले सेटा हमें पके दो. मैक्सिमम टाइम सेटा ठीक ही था, जेहेतु तुम माने एते पढ़ो एते बेसी प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम टाइम सेटा ठीक था, किंतु बेले बेले कंफ्यूजन हे जाए. तो जदी कंफ्यूजन होउची हाउ डू यू अप्रोच. फर्स्ट हला
she decides to donate a portion of her earnings to the local dash that supports unprivileged children. First, look at the tone of the sentence. See କଣ କହୁଛି? She decided to donate a portion of her earning to the local dash. ଗୋଟେ କାହା ଗୋଟେ local ଥିବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ okay that supports underprivileged children. Underprivileged children ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ support କରୁଛନ୍ତି. Okay, so that means the tone of the sentence is positive. Acha, eti tame jodi if you look at these options, atrocity, clarity, calamity, acidity and charity, okay, generally tame dekhu tame first asଥିବ ki this should be the answer should be charity, and you are right, the answer should be charity. Hela, local charity, nothing wrong with this, okay, किंतु बाकी सब गुड़ा कौन लोकल किसी क्लैरिटी, एट्रोसिटी, कैलामिटी, एसिडिटी कहीं लगे नहीं, बिकॉज देखो एसिडिटी इज द डिग्री ऑफ एसिड कंटेंट, कौन से जिनस रे द डिग्री ऑफ एसिड कंटेंट को हमें एसिडिटी कहबा. यदि एसिडिटी जदि के भाबिला एसिडिटी जोटा कि भाबिया कथा न, जदि के भाबिला एसिडिटी से एटलीस्ट फर्स्ट एटलीस्ट एति तो कंसीडर करियो दिस इज अ नेगेटिव वर्ड, एटा टोन ही चेंज कर दोची. कैलामिटी होची सम डिजास्टर्स इवेंट, डिजास्टर किछि ओडा डिजास्टर ही थाई पारे. ओके, अगेन एथे नेगेटिव आसीबो. क्लैरिटी माने क्लियर, something that is clear, how clear it is, सेटा होची clarity. तो एटा पॉजिटिव तो अछि ना, local clarity that underprivileged children that suppose underprivileged. अच्छा, बेले बेले जेते तुम माने बहुत बेसी पढ़ो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स को भी कंफ्यूज कर दे पारो. चैरिटी क्लैरिटी को कंफ्यूज कर दे पारो, किंबा क्लैरिटी संगे अन्य गोटे वर्ड भी साउंड करे क्लर्जी किंबा से भया जति किछि थिबो जोटा कि जो माने चर्च संगे रिलेटेड थिबो, ता संगे कंफ्यूज कर दबो तो मे बी सेटा भी माने भूल हे जिवो. सो क्लैरिटी नु जदियो सेम साउंड कोची, चैरिटी क्लैरिटी से बेले साउंड करूची, सो इट शुड नॉट बी. एट्रोसिटीज, एट्रोसिटी रो अर्थ कोन? डूइंग unlawful things. Okay, doing unlawful things criminally यदि किसी that enrages people, लोगों को यदि बहुत माने कौन लोकों को जदि बहुत डरे माने तांको बहुत राग करे दोची, से माने बहुत रागी जाउछन तमे एमती अनलॉफुल जिंस करूछो, ए सब माने उद्धतपण जिंस जो करूछो सेटा होची एट्रोसिटीज, डूइंग समथिंग, डूइंग अनलॉफुल थिंग्स दैट एनरेजेस पीपल. तो नेगेटिव इंटेंट, पॉजिटिव इंटेंट बट not the right word, contextually that ठीक न हो. Negative intent, the only one that is left is charity. Answer is charity. तो आमर जहाँ पैटर्न मु तुमको 30 सेकंड देबी नेक्स्ट वर्ड टू, तो मैं 30 सेकंड रे चूज करो, एडी 30 सेकंड में दरकार 15 सेकंड रे भी हे जिवो. तो लेट मी गिव यू 15 सेकंड, एवरी 15 सेकंड माने 15 सेकंड तुम चूज करो एंड वी विल डिसाइड. अच्छा, एटा IBPS 2024 the art gallery hosted an exhibition featuring works from some of the most dash artists in the world. 15 seconds.
ओके तो स्टार्ट करिबा आर्ट गैलरी hosted an exhibition featuring works of some of the most एई जो वर्ड अछि some of the most माने किछि किछि इंपोर्टेंट ही देखौ कि some of the most किछि बडा इंपोर्टेंट देखो some of the most important artists जदि तमे एडी सब्स्टिट्यूट भी करू देखो the art gallery hosted an exhibition featuring works from some of the most important artists in the world एमिति भी कुछ यदि अप्रोच गोटे अप्रोच अछि जो माने करंती से माने कोन करंती फर्स्ट निजे गोटे वर्ड सब्स्टिट्यूट करिवे ताबे देखिबे ये जो गिवन ऑप्शन को वर्ड ता संगे बेसी क्लोजली रिलेटेड होची एंड दे चूज दैट टू बी द आंसर तो देखिया इग्नोरेंट रो अर्थ कोन होची लैकिंग नॉलेज लैटेंट रो अर्थ होची हिडन रिमूवेबल रो अर्थ होची कैन बी रिमूव्ड प्रेस्टिजियस होची हैविंग high status religious होची generally saying relating to religion okay relating to religion so first hela amar ethi tone da kon chi the art gallery hosted an exhibition featuring works from some of the most dash artists in the world artist ro कोनसी गोटे एटा देखो सेमी देखियो एटा नाउन यदि नाउन पूर्वरु लागे सेटा गोटे एडजेक्टिव थिबो की प्रकार आर्टिस्ट सम टाइप ऑफ आर्टिस्ट जदि एडजेक्टिव देखुछो लैटेंट भी हे पर प्रेस्टिजियस भी हे पर रिलीजियस भी हे पर रिमूवेबल इग्नोरेंट भी हे परियो किंतु रिमूवेबल हबन रिमूवेबल आर्टिस्ट तो किछ नो तो फर्स्ट होची इग्नोरेंट जे की लैकिंग इन नॉलेज सी द सम ऑफ द मोस्ट इग्नोरेंट आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड माने ता अर्थ होची कि एभले आर्टिस्ट जो मानकर विशेष किछि नॉलेज नाही तो से भले लोग गैलरी होस्टेड द एग्जीबिशन काई करिवो सो दैट वे इट इज क्रॉस्ड लैटेंट माने हिडन आर्टिस्ट कहबो कियोटे कहबो सम ऑफ द मोस्ट हिडन आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड जदि किए कहूची सर जो आर्टिस्ट माने बहुत माने तांको विशेष किसी लोक जानि नाहंती तो से भले कियोटे कहबो सर ए भले तो इंटेंशन नहीं परियो कि से लोक को जानि नथिबे से भले आर्टिस्ट माने लोक जानि नथिबे तो मे बी सेति पई तांको रहिथिबो तो एठी लोक जानी नथिबे काहे कहबो मोस्ट हिडन आर्टिस्ट हेले माने से लोक लुचि की अछि अति लुचि की अछि तांकु काहे की गोटे द आर्ट गैलरी विल होस्ट एन एग्जीबिशन ओके मोस्ट लैटेंट आर्टिस्ट अर्थ जो आर्टिस्ट पर लुचि की अछि से भले लोकंकर आर्ट गैलरी काहे होस्ट करियो से भले कोनसी इंटेंशन देखा होची कि गोटे आर्ट गैलरी किछि गोटे चैरिटी इवेंट करूची कि किछि टैलेंट डेवलपमेंट करूची एभला किछि एथे तक किछि मेंशन हेइनी तो लैटेंट ए जगह हबनी काहे कि कारण एठी सेमति किछि डायरेक्टली लागुनी कि सेभला किछि माने डेवलपमेंटल आर्ट डेवलपमेंटल वर्क भलिया किछि होची तो लैटेंट एठी हबनी रिमूवेबल तो ऑब्वियसली हबनी प्रेस्टिजियस हैविंग हाई स्टेटस एटा हबो कारण आमे सम ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिस्ट कहितले जे इंपोर्टेंट से प्रेस्टिजियस तांकर प्रेस्टिज अछि तांकर भलो स्टेटस अछि आर्ट दुनिया तो प्रेस्टिजियस आर्टिस्ट हबो एटा का हबो P R E S T I G I O U S prestigious है ना रिलेटिंग टू रिलीजन होची रिलीजियस आर्टिस्ट मोस्ट रिलीजियस आर्टिस्ट नॉर्मली कहनी जदियो आमको साउंड करे हां बहुत रिलीजन ऊपर बहुत काम करछन से आर्टिस्ट रिलीजन ऊपर काम कर मे भी तुम माने भाबतर कि सर रिलीजन ऊपर काम करछन ठीक है हेई पारे किंतु गोटे जनरल परसेप्शन कोन गोटे आर्ट गैलरी अछि जोथरे कि आर्ट गुडा डिस्प्ले होची तो कोन हबो
जो माने भलो आर्टिस्ट तांकर ही तांको ये होची रिलीजियस आर्टिस्ट मे भी भलो होते पारती किंतु से माने प्रेस्टिजियस जनाशुना जदि हेथिबे तांको भलो स्टैंडर्ड थिबो ताहाले से ताको पोस्ट करियो सो यार आंसर हबो प्रेस्टिजियस द नेक्स्ट वन 15 seconds the book had an a or an अच्छा a और an देले कौन हुए मेन जनरली कंफ्यूजन हुए कि एठी a और an कोटा लागिवो a रे लागिवो ना an लागिवो कारण हमें सब से बळे देखे a an जदि सेम न देई था ना त हमें कहना अरे हां a जदि खाली an दे देथन ना हमें तीनटा दे देनो a देथले ए जोड़ा देथनो तो ठीक है कंफ्यूजन करे पे a और an देथा द बुक हैड a और an dash impact on her perspective changing the way she viewed the world ये सेंटेंस रा आगे अर्थ बुझो तापरे खोजिबो कि यार आंसर कोन ठीक अछि तो स्टार्ट करिया अच्छा कौन कौन हे पारे द बुक हैड अ डैश इंपैक्ट ऑन हर पर्सपेक्टिव सेंटेंस रो अर्थ कौन कि यदि बुझी परतो सेंटेंस रो अर्थ होची से कहूची कि सॉरी हाँ सेंटेंस रो अर्थ से कहूची कि से बहिरो गोटे पर्टिकुलर माने एमिति गोटे इंपैक्ट पड़ला ता ऊपरे से झियो उपरे गोटे तार देखिबा माने कोन जिंस विषय भाबिबा चिंता करिबा रो जो शैली उपरे एमिति गोटे इंपैक्ट पड़िला जोथरे कि जोटा तार पूरा माने दुनिया को देखिबार जो नजरियाटा सेटा ताकू चेंज कर देला गोटे एते एते डीप इंपैक्ट पड़िला हला तो एठी ऑप्शंस अछि प्रोफाउंड ट्रिपिंग एनक्रोच ओवरसी एक्यूरेटली तो की प्रकार इंपैक्ट पड़ी पारे इन गोटे बुक हैड अ डैश इंपैक्ट अच्छा कौन कौन ये वर्ड रो अर्थ कौन प्रोफाउंड रो अर्थ होची डीपली डीपली ट्रिपिंग रो होची वेरी एक्साइटेड अच्छा वेरी एक्साइटेड बट ये जो वर्डटा এটা ঠিক ইনফর্মাল এটা ফর্মাল ওয়ার্ড নহ এই যে সেন্টেন্সটা দেখুছো এটা পুরা ফর্মাল সেন্টেন্সটা দেখো the book had an dash impact on her perspective changing the way she viewed the world ହେଲା এটা ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖା ଅଛି किछि आधरे नुआ टाइप ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं जेमते कि द बुक हैड अ द बुक वाज अमेजिंग एभला किछ त नहीं द बुक वाज अमेजिंग आई फेल्ट रियली नाइस सेभला तो किछ नहीं से जो बुक रो गोटे एमिति इंपैक्ट पड़िला गोटे एमिति इंपैक्ट पड़ला जो कि तांकर दुनिया को देखिबार जो नजरियाटा सेटा चेंज हो गला तो एटा जेते इनफॉर्मल अछि आ एटा फॉर्मल अछि एठी टोन बदल जाउची सेते हमें बी टा को एक्सेप्ट करिबानी ओके तापर होची एनक्रोच माने एनक्रोच अर्थ होची टू ऑक्युपाई अनलॉफुली कौन सी जिनसटा को अनलॉफुली माने ऑक्युपाई करिचो तो सेटा को हमें कहबा एनक्रोच ओके हला ऑक्युपाई अनलॉफुली किंबा एमती भी कहो हां हमें एठी लिखिबा इंट्रूड
एटा बेटर हम इंट्रूड अर्थ होची कोनसी कहा कहा एरिया रे पसि जिबा कहा घरे पसि जिबा तांको इंट्रूजन करिया त माने ऑक्युपाई अनलॉफुली इंट्रूड करिया ठीक अछि एनक्रोच ओवरसी फर्स्ट लुक रे जदि के जानि पारनो ए वर्ड ता भूल अछि एटा ओवरसीज हवा कथा तो इमीडिएटली एटा एलिमिनेट कर दवा कथा ए वर्ड ता भूल ही अछि ओके ओवरसीज अच्छा एक्यूरेटली अर्थ कोन परफेक्टली सॉरी परफेक्टली परफेक्टली माने पूरा ठीक अछि तो कोन अछि द बुक हैड अ परफेक्टली इंपैक्ट तो होनी कारण सेठी had an sorry हाँ had an perfectly impact एटा होनी त माने एक्यूरेटली इंपैक्ट होनी एक्यूरेट इंपैक्ट होनी गोटे डीप इंपैक्ट गोटे बड़ इंपैक्ट हेची तो एक्यूरेट टा कॉन्टेक्स्ट वाइज ठीक न एनक्रोच कौन सी कहा अन्य एरिया रे पसि जाइनी तो सेटा भी होबनी तो आमर गोटे रहला प्रोफाउंड जहार अर्थ होची डीपली तो यार आंसर हो द बुक हैड had a profound impact on her perspective, changing the way she viewed the world. तो बुक रो एते एते गोटे डीप तांको रो इंपैक्ट हला तांको ऊपर जोथे से जो भलिया दुनिया को देखुतिले से पर्सपेक्टिव ता चेंज हे गला नेक्स्ट आईबीएस 24 रो बेटा द sudden power outage threw the entire city into dash with traffic jams and confused crowd everywhere तमे जस्ट एतिकी ऊपर फोकस जदि करी देलो कोन हैला ता माने जानि परबो को वाटर हेबो द सडन पावर आउटेज थ्रू द एंटायर सिटी माने माने सिटी को कोड फोपाड़ी देनी थ्रू द माने गोटे क्रिएट कला गोटे सिचुएशन हिसाब रे क्रिएट कला द सडन पावर आउटेज थ्रू द एंटायर सिटी इनटू डैश with traffic jam and confused crowds everywhere 15 seconds स्टार्ट करिवा तो कौन है आगे आम देखा आम निजे सब्स्टिट्यूट गोटे करिया द सडन पावर आउटेज माने कौन लाइन कटि गला द सडन पावर आउटेज एक्चुअली आम लाइन कटिला बोली कहया कथा ना आम कहया कथा पावर आउटेज ही द सडन पावर आउटेज थ्रू द एंटायर सिटी इनटू पावर आउटेज कौन कला गोटे सिटी रे गोटे एमि सिचुएशन कला जोटा की जोथरे ट्रैफिक जैम्स हैला विथ ट्रैफिक जैम्स एंड कंफ्यूज क्राउड एवरीवेयर माने ट्रैफिक जैम हैला और लोक गुडा कंफ्यूज्ड हो गेले सारे सब बड़े कंफ्यूज्ड हो गेले हैला तो कौन हैला एडी द सडन पावर आउटेज थ्रू द एंटायर सिटी इनटू डैश विथ ट्रैफिक जैम्स एंड कंफ्यूज क्राउड एवरीवेयर तो हमर सब्स्टिट्यूट कोन हो कि the sudden power outage threw the entire city into disruption माने कोन जो डिस्टर्ब कर जो उपाय काम जेमति काम चलता सोटा टिके डिस्टर्ब करला into disturbance भी हेपरियो disruption भी हेपरियो with traffic jam and जोथरे की डिस्टर्बेंस हला जोथरे की ट्रैफिक जैम हे गला आ लोक माने भी चारियाडे माने कोन फील कले चारियाडे से माने फील कले कि कंफ्यूज फील कले राइट तो ये देखिए कौन ये सब वर्ड अर्थ कौन कंकर अर्थ होची टू जे कहूची राजुत करिवा कि विन करिवा भूल से स्पेलिंग अलग CONCUR इज टू अग्री हैला chaos complete disorder
growth, development, কিংবা increase, peculiar, strange, ଆଉ nascent, nascent ର ଅର୍ଥ ହଉଛି in the beginning stage, in the starting phase କିମ୍ବା beginning stage. or starting phase. ଏବେ clear ହେଇଯିବ. Once you know all the meaning of the words, ଏବେ it is very clear कि सेठी किछि एग्री करियाको नथिला, किछि ग्रो करियाको नथिला, किछि स्ट्रेंज नथिला, किछि बिगिनिंग हो नथिला. तो एठी आंसर कौन हबो? CHAOS. जदि किए भाबुची पिक्युलियर स्ट्रेंज सिचुएशन, जदि किए भाबुची देखो स्ट्रेंज सिचुएशन हबा किबा डिसऑर्डर हबा माने पूरा डिसऑर्डर हे जिवा, लोक माने पूरा कंफ्यूज हे जिवे केतोळे जले सबु यार्ड शॉट हे जिवे जिंसोडा जो गोटे ऑर्डर चली थिबो से हठात सेटा चेंज हे जिवो, तो डिसऑर्डर हे जिवो. सो डिसऑर्डर हे गेले लोक कंफ्यूज हे जिवे. स्ट्रेंज हेले लोक माने आश्चर्य हे जिवे, दे विल बी सरप्राइज्ड नॉट कंफ्यूज्ड. ठीक अछि. सो द आंसर शुड बी chaos. Next, once the switch was flipped, the machine was dashed and began operating smoothly. Acha. Once the switch was flipped, the machine was dashed and began operating smoothly. Acha, eta je no dekhauchi e word ta hochi kon lagaichi ha deactivated. अच्छा, तो वेल्टेड, इन्वोक्ड, एक्टिवेटेड, कैप्टिवेटेड, डीएक्टिवेटेड. ठीक है जी. 15 सेकेंड्स. ओके, यार किछि कहार भी डाउट है तो समझ जानछंती आंसर टा कोन. या आंसर टा होची जदि स्विच ऑन करा गला मशीन टा एक्टिवेट हे गला, तो एक्टिवेट हे गला, तो एक्टिवेटेड एटा होची आंसर. सॉरी, CATED, हां एक्टिवेटेड, सॉरी एक्टिवेटेड एंड बिगन ऑपरेटिंग स्मूथली. एटा समझ जानछि आंसर. नाउ द क्वेश्चन इज बाकी एगुडार अर्थ कौन? अच्छा, ए डीएक्टिवेटेड समझ जानछन्ते, एक्टिवेटेड उल्टा होची डीएक्टिवेटेड, तो हमें सेटा कवर करिबानी. बट देन कैप्टिवेटेड, इन्वोक्ड, वेल्टेड. अच्छा, मेन जिन होची वेल्टेड रो अर्थ कोन, इन्वोक्ड रो अर्थ कोन? बेले बेले एई भलिया वर्ड जोडा कि तम माने जनरली तम रीडिंग रे न आसेनी, तुमको लगे अरे एटा बदे हेतिबो, अरे एटा तो लागुनी, किंतु ए वर्ड तो मीनिंग जानिनी हेतिबो कि एई वर्ड ता ही हेतिबो, एटा बदे बेसी करेक्ट हेतिबो, गोटे मन आसे बेसी करेक्ट हेतिबो. सेई जो जिनसडा हुए सेते बेले एई भलिया वर्ड जेतले आसे हम कंफ्यूज हो जाओ. तो आगो होची एक्टिवेटेड होची आंसर. ठीक है. कैप्टिवेटेड माने होची टू अट्रैक्ट, होची कैप्टिवेटेड.
invoked, to call upon माने डाकिबा यार सुनो इन्वोक कॉल अपॉन कहा को अ लॉ कौन सी रूल ओके रूल किंबा डीएटी कौन सी देवता कौन सी लॉ किंबा कौन सी रूल को जिते बड़े डका जाए माने ताको इन्फर करा जाए कि ताको एई जगह एई जिनसटा लागिवो एई रूलटा एई जगह एप्लीकेबल अछि भगवान को डका होची एई भळे जेतला हम यूज करछे सेटा होची इन्वोक वेल्टेड रो अर्थ होची टू टॉस इन समथिंग किछि गोटे जिंस माने मझी को भितर को पकई दब तो सेटा हबो टू टॉस इन समथिंग होची वेल्टेड ओके तो सेति पई वेल्टेड हबनी इन्वोक्ड हबनी कैप्टिवेटेड हबनी डीएक्टिवेटेड हबनी जनरली समते ही ये आंसर ठीक पाइथबे एक्टिवेटेड एई जो वर्ड गुडा बेले बेले कंफ्यूज कर दियंती तो जस्ट फॉर दैट बी केयरफुल जानी जो आंसर दे देबो simple answer is the best answer next the dentist had to dash the decayed tooth to prevent further infection एटा निजे वर्ड सब्स्टिट्यूट करो आराम से आंसर पाई जीवो यहाँ पे 15 सेकंड दरकार ना आंसर मिल गलानी मत जा लागुची आंसर मिल जाइथिबो बट स्टिल ताले मु खाली यार मीनिंग गुडा दे दोची मॉडिफाई टू चेंज स्लाइटली कौन सी जिनस को मॉडिफाई करबा चेंज करबा अल्प टिके चेंज करबा को सेटा हमें मॉडिफाई करते मॉडिफाइड बाइक मॉडिफाइड कार सब आसी कार अछि तादर टिके चेंज होची हैला एक्सक्यूज टू फॉरगिव हमें कोन एक्सक्यूज मी फॉरगिव मी मुटिके जीवा चाहूची राइट टू रिक्रूट इज टू एनलिस्ट एनलिस्ट अर्थ माने तमे काहाकू कौन छोटे प्रोग्राम रे एंट्री दउछो तो सेटा कोन हो ताकू से प्रोग्राम रे जो जो लोक अछि तांका से लिस्ट रे ता ना पड़छि सेटा कोनछि एनलिस्ट टू रिक्रूट टू एम्प्लीफाई टू मेक लाउडर टू मेक बिगर और लाउडर है ना to amplify to make bigger or louder remove to take away so एटी only गोटे the dentist had to dash the decayed tooth कौन सड़ी जाउथुबा दांत को कौन करिवे से बाहर कर देबे रिमूव कर देबे तो रिमूव्ड ही हबो had to remove had to remove the decayed tooth to prevent further infection modify तो करिवे नी चेंज तो करिवे नी एक्सक्यूज फॉरगिव का करिवे रिक्रूट ता कोन जगह रिक्रूट करबे नी एम्प्लीफाई जदी बढ़े देले तो ताको तो बेसी कष्ट होबो ना सो द डेंटिस्ट हैड टू रिमूव नेक्स्ट IBPS PO 25 the new technology promises to dash the way we perform everyday task अच्छा एक सेंटेंस अर्थ बुझो अर्थ बुझी गले आंसर टा आराम से मिल जाओ
ओके तो कौन हला आंसर कौन है एइथरे किछि पिला कंफ्यूज हेई भी थिले एबे भी हेई थाई पारंती तो फर्स्ट हमें आया आंसर गुड़ा जो माने जो ऑप्शन मीनिंग गुड़ा हमें थरे चेक कर दबा कि इम्पीड माने कौन इम्पीड माने कौन क्लेम माने कौन स्टैग्नेट माने कौन डिटोरिएट माने कौन ऑगमेंट माने कौन ओके तो इम्पीड रो अर्थ होची टू स्लो डाउन है इम्पीड अर्थ होची टू स्लो डाउन तो न्यू टेक्नोलॉजी प्रोमिसेस टू स्लो डाउन अ वे टू परफॉर्म एवरीडे टास्क माने काम गुड़ा को स्लो डाउन कर दो कि न्यू टेक्नोलॉजी जते आसी सब गुड़ा फास्ट हो जाउची तो ऑब्वियसली इम्पीड होबनी क्लेम होची टू प्रेज प्रेज माने ता प्रशंसा करिवो टेक्नोलॉजी गुड़ा प्रशंसा काई करिवो सेदरे कोन भी हेल्प होबो नो स्टैग्नेट टू stop development डेवलपमेंट अच्छा ये जो एक्सप्लेनेशन देली मे बी समझ को सर स्टैग्नेंट माने तो एकदम स्थिर स्टैग्नेंट माने तो माने पुराना पानी गुड़ को हमें स्टैग्नेट कहू किंतु एटा स्टॉप डेवलपमेंट कहीं देले ए कॉन्टेक्स्ट रे स्टैग्नेट रो अर्थ कोन हेबो टेक्नोलॉजी कॉन्टेक्स्ट रे स्टैग्नेट रो अर्थ कोन हेबो टू स्टॉप डेवलपमेंट ये भी गोटे अर्थ स्टैग्नेट रो कि टू स्टॉप डेवलपमेंट ग्रो करिबा डेवलप करिबा सेटा को माने तार भी गोटे अर्थ तो मु ए कॉन्टेक्स्ट हिसाब रे मु यार एक्सप्लेनेशन देली तमे जो एक्सप्लेनेशन ता जा मीनिंग ता जानो सेटा भी ठीक से अलगा कॉन्टेक्स्ट रे बसियो ये ए कॉन्टेक्स्ट रे बसियो डिटोरिएट टू मेक वर्स ऑगमेंट टू मेक बेटर improve or make bigger sorry make bigger है to make better improve or make bigger the new technology promises to improve the way we perform everyday task ठीक लगला the new technology promises to improve the way we perform everyday task तो सेठी कौन हबो augment 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 है स्लो डाउन करबनी acclaim praise करबा दरकार नहीं stagnate obviously stop development कहीं करबो deteriorate to make worse ये भी नहीं एटा अछि एटा भी गोटे पॉजिटिव अछि बाकी देखो प्राय सब तक नेगेटिव टोन ने अछि एटा गोटे पॉजिटिव टोन ने अछि ओके नाउ नेक्स्ट वन The athletes' rigorous training and unwavering determination dash to their remarkable success. The athletes' rigorous training and unwavering determination এই গুড়া সব যদি পড়িবো অটোমেটিক্যালি তুমি জানি পারিবো এই লোকটি কাফি ডিটারমাইন্ড আছে মানে সেন্টেন্স র সেন্সটা পজিটিভ আছে তো athletes rigorous training and unwavering determination dash to their remarkable success हैला कोन हेथिबो 15 सेकंड करो
ओके तो कौन होला the athletes rigorous training and unwavering determination dash to their remarkable success तांको सक्सेस को कौन करथिबो तांकर बहुत माने बहुत अधिक डिटरमिनेशन थिला आ तांको सक्सेस को से डिटरमिनेशन जगु अचीव करथिबे ए तो हमें एटलीस्ट बुझि पते तो डिटरमिनेशन कौन कर तांको सक्सेस को ऐड कला कि भाई तुम जेहेतु तुम डिटरमाइंड तो तुम सक्सेसटा अचीव कलो तो सेटा कहला तो कौन हबो हम बेक अछि कंट्रीब्यूटेड टू मेक हैपन टू ऐड टू समथिंग to make happen है ना मुझे detracted is to reduce negative tone अच्छी यार हबनी underestimated judge less isolated separate है ना आइसोलेटेड सेपरेट इंपीडेड हिंडर हिंडर अच्छा हिंडर न करगी हिंडर अर्थ होची हिंडर जोटा मु लिखुतली हिंडर रो अर्थ होची टू क्रिएट डिफिकल्टी है ना मैंने कौन हिंडर अर्थ हो डिफिकल्ट टू क्रिएट डिफिकल्ट माने कोन जिंस हबा को न दबा सेटा हिंडर डिफिकल्टी क्रिएट करिया तो होची एठी कोन हबो डिटरमिनेशन जोगु तांको सक्सेस मिलला तो डिटरमिनेशन कोन हबो एटा हबो कंट्रीब्यूटेड डिटरमिनेशन से बहुत अनवेवरिंग माने जोटा की अनशेकेबल डिटरमिनेशन थिला जोटा की तांको सक्सेस को कंट्रीब्यूट कला तांको सक्सेस अचीव करे तांको सहाय्य कला डिट्रैक्टेड किछि तांकर माने डिवैल्यू तो कलानी अंडर एस्टिमेट तांको तांकर अंडर एस्टिमेशन तांको कम जज करा गलानी तांको आइसोलेट करा गलानी सेपरेट करा गलानी आ इंपीड माने कोन जगह रे बाधा क्रिएट करा है सो द आंसर होची कंट्रीब्यूटेड नेक्स्ट द न्यू रेगुलेशन aim to dash fair competition among all participants dash fair competition एटा बड़ा बड़े इंटरेस्टिंग फ्रेज टे एटा ये ऊपर ध्यान दियो हमको आराम से आंसर मिलिबो अच्छा एटा कोन लिखा है तळे लिखा है एटा लिखा है फ्रैगमेंट FRAGMENT फ्रैगमेंट यस है ना तो द न्यू रेगुलेशन एम टू डैश फेयर कंपटीशन आगे बुझी दियो कौन कहूची ताहा पर तार आंसर दबो तो यार अर्थ यार सब अर्थ वाला कौन हो अच्छा द न्यू रेगुलेशन एम टू कौन कर दो द फेयर कंपटीशन अमंग द ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट समस्त में फेयर कंपटीशन करिया पे एम करथो माने कौन होतो कौन हेतु
possible word कौन ही थे पर the new regulation aim to bring fair competition among all market participant है पर समस्त पे आनिबो और make sure fair competition among all market participant माने से sure make sure करिवो कि समस्त पे fair competition एई भलिया किछि गोटे हेतिबो तो एठी गोटिए वर्ड अछि जोटा कि सते फिट बसछि कोन enforce the new regulation aim to enforce fair competition among market participants माने से कोन करछि फोर्स करूछि कि सब जो माने भी पार्टिसिपेट करछन्ती मार्केट रे जो माने भी पार्टिसिपेट कर समस्त को फेयर चांस मिलु राइट तो बाकी वर्ड गुडार अर्थ कोन तो इनफ्रिंज रो अर्थ होछि टू सिंपल टू वायोलेट अच्छा वायलेट रो अर्थ कोन माने कलर बाइगणी कलर नो टू वायलेट रो अर्थ होची माने कोन छोटे लॉ अछि गोटे रेगुलेशन अछि से लॉ आ रेगुलेशन के जो न मानुचंती ताकू कहंती इनफ्रिंजिंग तापरे होची relinquish रो अर्थ होची मु छाडी लाइक आई गिव अप मोर कोनोसी जिंस ऊपर अधिकार थिला मु से अधिकार को छाडी देली ताकू मु कहबी relinquish to give up हैला तापर होची कोन constrain होची to limit limit or restrict हैला fragment रोते अर्थ होची break into pieces एटा तो हबनी फ्रैगमेंट हबनी कंस्ट्रेंट काई हो कंस्ट्रेंट फेयर कंपटीशन तो हबनी एटा नेगेटिव टोन आछी रेलिंक्विश में छाडी देबा फेयर कंपटीशन छाडी दो अगेन एटा नेगेटिव टोन आछी एनफोर्स माने आनीबा टू ब्रिंग इन तो एटा हबो इनफ्रिंज हबो टू वायलेट भी करबनी एटा भी नेगेटिव टोन आछी तो ए कॉन्टेक्स्ट रे खाली एनफोर्स ता ही ठीक बसची सो द आंसर इज एनफोर्स नेक्स्ट The exam rules must be dash followed to ensure fairness for all the students. The exam rules must be dash followed to ensure fairness for all students. अच्छा एठी देखियो तुम एटा खाली डैश टा हटे के भी पढुछो ए मीनिंग ता ठीक आछी The exam rules must be followed to ensure fairness of the student. एटा एई भले जगह रे बहुत कंफ्यूजन है सेंटेंस में ऑलरेडी काले भूल से लिखि दी देखो सब तो एडवर्ब ऑल एडवर्ब्स हैला तो एटी को एडवर्ब बसियो बी पर को एडवर्ब बसिबो ताल जाय कि माने हमरो सेंटेंस ता कॉन्टेक्चुअली ठीक हो राइट गिव इट 15 सेकंड्स अच्छा ताले आमे एबे यारो मीनिंग गोटे देखि तमे जानि जो scarcely preciously strictly hardly mostly तम माने यदि जानि माने ऑलरेडी डिसाइड कर देथिबो कि मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड स्टूडेंट आमे समझ स्टूडेंट थिले आमे समझ जानचे रूल्स मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड ए सेंटेंस बारंबार आसीची हैला तो एटा स्ट्रिक्टली ही हबो हेले भी स्केर्सली अर्थ कोन बेयरली स्केर्सली अर्थ होची बेयरली अर्थ कोन माने कोन जिंस हो माने ऑलमोस्ट नुह
काले ही जाई थांदा कि माने कोन जिंस बहुत कम फ्रीक्वेंसी रे होबा सेटा को हमें कहबा स्केर्सली बेयरली होची माने हो ही नहीं ऑलमोस्ट सेम भलिया preciously in a precious manner preciously माने सेटा preciously अछि जा अर्थ होची टिके दामिकिया माने टिके प्रीशियस मैनर रे किछ गोटे थिबो हार्डली हार्डली रो अर्थ होची ऑलमोस्ट नॉट एटा हार्डली वर्क हार्डली एक साथ आसे कंफ्यूजन करेनु बहुत पिला कंफ्यूज करदी ही वर्क्स हार्डली तमाने हार्ड रो ऊपर दा होची हार्डली ना 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 ही वर्क्स हार्ड माने बहुत मेहनत करची ही वर्क्स हार्डली माने से माने काम ही करूनी ऑलमोस्ट नॉट कंफ्यूज करिवनी अच्छा मोस्टली रो अर्थ होची मेनली है ना स्ट्रिक्टली ऐसा स्केर्सली प्रीशियसली हार्डली मोस्टली देखलम ए बाकी चारटा कॉन्टेक्स्ट हिसाब रे ठीक बसुनी गोटे आमे ऑलरेडी जानि छ स्ट्रिक्टली सेटा होची हम नेक्स्ट अच्छा ठीक है पढ़ो देखो यार आंसर कौन है पर 15 सेकंड्स अच्छा एथरे कीवर्ड गोटे अच्छी देखियो द लूजिंग टीम मेड अच्छा देखो एटा पड़ी लागो नेगेटिव चल द लूजिंग टीम मेड हैला इट लाइक नेगेटिव टोन आसो मेड डैश बट रो अर्थ कोन जा बट जोटी कंजंक्शन लागला ता तार सिंपल अर्थ हो पूर्वरु जहा थिला परटा ताठो तार एग्जैक्ट उल्टा थिबो बट रो पर कोन अछि फ्यूटाइल एफर्ट माने फ्यूटाइल अर्थ को जोटा बेसी माने यूजफुल नथिला से को कहू द लूजिंग टीम मेड अ डैश बट फ्यूटाइल एफर्ट माने से बेसी माने हेल्पफुल एफर्ट नथिला किंतु से गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिंस करथिबो जो ता परे किंतु सेटा यूजफुल नथिला किंतु सेटा यूजफुल नथिला टू एफर्ट टू कैच अप टू देयर ओपोनेंट हैला किछि गोटे बेसी माने गोटे माने इंपोर्टेंट काम करथियो जेंती यार व्हाट कौन से लूजिंग टीम मेड अ brave but futile effort the losing team made a made an तो हबनी कारण ए अछि made a the losing team made a great effort but great but futile effort सही भलिया राइट टू कैच अप तो एठी जो वर्ड्स गुडा अछि तार अर्थ कोन हम जदि जानि जिबा त हम आंसर गुडा आस जिवो इलस्ट्रेटर्स होची फेमस तो मेड अ फेमस बट फ्यूटाइल उल्टा तो माने फेमस हबनी ब्रेव वैलिएंट अर्थ होची ब्रेव रिफ्रेन माने स्टॉप्ड फ्रॉम डूइंग समथिंग रीच्ड arrived redundant unnecessary ना एटी कोन अछि फेमस बट फ्यूटाइल एफर्ट तो हे परिबनी
रिफ्रेंड तो है बनी एटा भी नेगेटिव सेटा भी नेगेटिव ना एटा तो पॉजिटिव वर्ड हवा कथा ब्रेव टा होची पॉजिटिव वर्ड अछि तो एटा हबार चांसेस अछि रीच्ड किछि तार अर्थ माने अर्थ जो से पहुंच या ऊपर तो किछि कॉन्टेक्स्ट ही नहीं रिडंडेंट अननेसेसरी अगेन एटा भी नेगेटिव अछि गोटी अछि वैलिएंट पॉजिटिव एटा कोन हबो वैलिएंट अर्थ होची ब्रेव द लूजिंग टीम मेड अ ब्रेव बट फ्यूटाइल एफर्ट टू कैच अप टू देयर ओपोनेंट हला द आंसर इज वैलिएंट अच्छा एटा देखो My grandmother has extremely dash health, so she sees the doctor once in a week. निजे जेजेमा विषय भाविले भी तो आंसर टा आराम से पाई जियो किंतु अति भाबियोनी अति भाबिले भूल आंसर बाहरियो अच्छा मु यार आंसर ओडा लिखि दोची माने तार मीनिंग ओडा लिखि दोची तम माने डिसाइड कर देखियो क्रिपल अर्थ होची वीकन समथिंग हला रिलायंट अर्थ होची डिपेंडेंट स्प्लेंडेड अर्थ होची मार्वलस फ्रेजाइल होची इजी टू ब्रेक एलिवेट होची राइज अप देखी दियो आंसर टा कौन हम आंसर टा हम डेफिनेटली क्रिपल तो नुह जदि किए भावी क्रिपल से खाली वीक टा को देखी एटा वीक नुह से कुछ वीकेन समथिंग कौन से जिनस को वीक करिदबा ग्रैंड मदर इज ऑलरेडी वीक तो सेठी वीक करिदबा लागिवनी तो क्रिपल लागिवनी रिलायंट डिपेंडेंट क्यों माय ग्रैंडमदर हैज एक्सट्रीमली डिपेंडेंट रिलायंट हेल्थ माने हेल्थ कहा पर डिपेंड करछि सेमे हेल्थ कहा पर डिपेंड करनी तमे रिलायंट ऑन अ पर्सन ही परियो किछि पर्सन से कहन तांग हेल्थ विषय कहछि तो एटा हसिबनी मार्वेलस हेल्थ जदी हछि ताल से डॉक्टर बको कहि जिवे फ्रेजाइल इजी टू ब्रेक किंबा आमे एटा को वीक भी कहू जोटा इजी टू ब्रेक सेटा वीक नो कि तो एटा कौन हम फ्राजाइल एलिवेट तो राइज अप ग्रैंडमदर का हेल्थ राइज अप करिया नहीं तो आंसर हबो फ्राजाइल अच्छा ठीक अछि तो एटा थिला वन वर्ड वन ब्लैंक सब्स्टिट्यूशन आमे सीरीज टा कंटिन्यू करबा जो तरह की टू वर्ड टू ब्लैंक सब्स्टिट्यूशन आउ क्लॉज पैसेज से गुडा को हमें डील करबा तो एटा सीरीज रो फर्स्ट थिला जोटा की वन वर्ड वन ब्लैंक रो क्वेश्चंस गुडा में डील करले फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल डील विथ टू वर्ड टू ब्लैंक्स आउ क्लॉज पैसेज ओके थैंक यू ऑल टेक केयर